Assalamualaikum everyone. In today's video, we are going to discuss about the cardiac cycle. So, in the previous lecture, we have discussed about the ECG and the interaction of heart, blood vessels, and that like things. So, in today's video, we are going to discuss this important chapter, which is about your cardiac cycle. So, before we are going to start this video, I request you to please subscribe to my channel, like my videos, and also press the bell icon to get the notification of all the videos. So this is the chapter number 91 from the JP book. So now let's start the lecture. Bismillahirrahmanirrahim. So first of all, we are going to define that what is your cardiac cycle. Okay, so the definition of cardiac cycle, that it is a sequence of coordinated events that take place in a heart during each beat. Okay, so these are a sequence of coordinated, all the events are coordinate and with each other, combine up with each other and make your one heartbeat. So your one cardiac cycle is equal to your one heartbeat. And the important thing you have to learn, that the duration for this cardiac cycle is for about 0.8 seconds. Okay, so each heartbeat is consists of two major periods, systolic and diastolic. So your heartbeat is divided into what, two periods or two intervals. Okay, so these intervals join up or work upon in a coordinated events and take place after one another and make your what, heartbeat during the systole. Now we are going to explain what is systole and what is diastole. So during the systole, your heart is going to contract, okay, and pump your blood to arteries. Okay, so now during the diastole, your heart is going to relax and fill itself with the blood. Okay, so this is the major concept about the systole and diastole. You have to keep this in your mind. Okay, during the systole is from C and contraction is from C. So systole is from S. Okay, sorry for that. So C and S is related with each other, but during the diastole, relaxation occur and the blood filling process occur. Okay, during systole, blood conducting process or blood donating process or blood pumping out process. Okay, during the diastole, there is a relaxation period, there is a blood filling period. Okay, now all of these changes are repeated during every heartbeat. Okay, all of these changes are repeated during every heartbeat and play important role in a cyclic manner. Okay, पहले सिस्टोल हुआ फिर डायस्टोल होगा. ठीक है, सिस्टोल से कहाँ गया डायस्टोल, फिर डायस्टोल से अगेन सिस्टोल. तो मतलब एक कार्डियक साइकिल इन अ साइक्लिक मैटर, these are events coordinate with each other and make your one heart beat. Okay, so now we see what are the deviations or durations during your cardiac cycle. So when a heartbeat is normal, rate of your heartbeat is 72 minutes per minute. So this is the normal value. It could be high, it could be low. And the duration for your one cardiac cycle, I have explained to you that it is 0.8 seconds. Now you have intervals in it. For example, arterial interval, ventricular systole, ventricular diastole. ठीक है ना? So your arterial events compose of further two divisions, arterial systole and arterial diastole. It is very obviously that your arteria also undergo the period of relaxation and period of contraction. So whenever your arteria is going to contract, arterial systole is going to happen, and whenever your arteria is going to relax, the arterial diastole is happening. Okay, now the time interval for these events are also given. Now for in the ventricular events, again two events is going to happen, ventricular systole and ventricle diastole, which represent the contraction and relaxation of what, your ventricles. Now the time duration for each of these events are also given to you, and you can see here in the ventricular systole the time is this, ventricle diastole may further there is a division in them. So the ventricular systole is again divided into isometric contraction and ejection period, and your ventricular diastole means during which ventricles are dilated or relaxed. So protodiastole, isomeric relaxation. This is isometric contraction. This is isometric relaxation. This is the ejection period. This is the rapid filling period. Okay, so now we discuss it.
So among the arterial events, arterial systole occur during the last phase of ventricular diastole. It means your ventricular diastole ended and your arterial systole starts. Okay, so what is going to happen? सबसे पहले क्या है, योर आर्ट्रियल, क्या ए से आर्ट्रियल एंड एस से सिस्टोल, ये हैपन होंगे। और इसके बाद इससे पहले क्या आएगा, वेंट्रिकल्स की डायस्टोल, वेंट्रिकल्स डायस्टोल होंगे, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। देन आर्ट्रियल डायस्टोल इज नॉट कंसिडर एज अ सेपरेट फेज सिंस इज कोलाइड विद द होल वेंट्रिकल सिस्टम एंड अर्लियर द पार्ट ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल। सो इन दोनों को हम एक ही सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, इनको अलग अलग हम नहीं करते हैं, ठीक है। साथ ही आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और साथ ही वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। सो अब हम लोगों ने इनको डिटेल से पढ़ना है कि आर्ट्रियल सिस्टोल क्या है, आर्ट्रियल डायस्टोल क्या है, ठीक है। तो हम अब हर चीज़ को अलग अलग देखते हैं। तो आर्ट्रियल सिस्टोल को हम लास्ट रैपिड फिलिंग फेज भी कहते हैं, या हम इसको क्या कह रहे हैं, प्री सिस्टोल भी कह रहे हैं, या हम इसको कहते हैं लास्ट रैपिड फिलिंग फेज, क्या लास्ट टाइम में रैपिड फिलिंग हो रही है, ठीक है। सो लास्ट रैपिड फिलिंग फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें आर्टेरिया ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे फिलिंग नहीं होती है। तो लास्ट रैपिड फिलिंग फेज का मतलब यह है कि लास्ट टाइम पे बस जल्दी से जो है वो ब्लड फिल हो जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो लास्ट रैपिड फिलिंग फेज इसलिए क्या है, और इसको हमने प्री सिस्टोल भी कहा है क्योंकि ये पहला हमारा कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड आता है, इसलिए हम उसको प्री सिस्टोल भी कहते हैं। सो इट यूजली कंसिडर एट द लास्ट फेज ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल। तो ये वेंट्रिकल डायस्टोल की लास्ट फेज है क्योंकि इसके बाद वेंट्रिकल डायस्टोल होना होता है, और इसकी ड्यूरेशन आप लोग देख सकते हैं 0.11 सेकेंड्स तक का है। अच्छा, उसके बाद आपने देखना है इसके प्रेशर और इसके वॉल्यूम में चेंजेस क्या आती हैं। तो ड्यूरिंग आर्टेरियल सिस्टोल आप लोग देखेंगे जो इंट्रा आर्टेरियल प्रेशर है, ठीक है, आर्टरीज के अंदर का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाएगा। जाहिर बात है कि आर्टेरियल सिस्टोल हो रहा है, मसल्स आर्टरी के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन में प्रेशर बढ़ता है। इसके साथ साथ जो वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो रही है, वेंट्रिकल्स डायस्टोल हो रहे हैं, तो क्यों क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अब आर्टरी के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकल्स में भी प्रेशर बढ़ जाएगा। एंड द वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल्स आल्सो इंक्रीजेस बट स्लाइटली। ओके, सो क्या हो रहा है कि इंट्रा आर्टेरियल के प्रेशर भी बढ़ रहा है और इंट्रा वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर है वो भी बढ़ रहा है। ये आर्टेरियल का प्रेशर, दिस इज द वेंट्रिकल प्रेशर, एंड द वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस बट स्लाइटली। ओके, so now we move on to the arterial diastole. So in the arterial diastole, after your arterial systole, means after the contraction of your arteries, now your arterial diastole occur, your arteries is going to relax. So the अच्छा, so the time period for this event is about 0.7 seconds, and you know, in this period your arteries are going to fill, okay, and they receive deoxygenated blood. So this is the major information about it. So now we move on to the ventricles events. So in the ventricles events, first event is the isomeric contraction period. So this is our cardiac cycle. You use, as you can see, this is the period of arterial diastole and फिर arterial contraction. Red period is arterial contraction. Then there is a ventricle systole, ventricles contract, then the ventricle dilation. So this is the period of whole cardiac cycle. So I think this concept was clear to you. So now we move on to the next event, that is about the ventricles event, but in the next lecture. Okay, in today's lecture we have covered the arterial systole and the arterial diastole. In the next lecture we will discuss what are the ventricles events and we will see the detail of it. So this was the part 1 of this video, and in the next lecture we will discuss the remaining chapter. So take care of yourself, keep me remember in your prayers, and take care of yourself. Allah Hafiz.